Hey guys, welcome back to Rush Drive. आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है because after tons of spy shots, Yezdi has finally made a comeback into the motorcycle market. But when it comes to history of the brand Yezdi, there's a lot of things to uncover. So let's begin with the brief history of the brand Yezdi. Before 1980s, Jawa, Royal Enfield, Yezdi were the household names. Jawa among these had a cult following back in the days, something which the Royal Enfield enjoys now. In 1973, Jawa motorcycles were sold in India before being replaced by the Yezdi bikes. Yezdi bikes had a huge fan base because of its powerful engine and good performance at that time. But things changed post-90s globalization as more and more two-wheeler manufacturers, especially those from Japan, started eyeing India as a potential market. These big, bulky, shiny and iconic motorcycles were replaced by compact and easy to use scooters and bikes. Only Royal Enfield survived the paradigm shift in the industry. After that, Royal Enfield just became more popular, due to which Yezdi was not able to cope up. So finally, Yezdi has marked their entry in the motorcycle market with their 3 brand new bikes, Yezdi Scrambler, Yezdi Roadster and the Yezdi Adventure. So today we are going to give you a complete review of Yezdi Scrambler, but before getting into the video, enjoy those beautiful cinematics and don't forget to watch till end. So yes guys, this is our Yezdi Scrambler. Let's talk about the specs of this bike. It has got a beautiful LED headlight with the Yezdi symbol integrated in it, and both the indicators are also LED, including the tail light. It has a telescopic fork suspension and a 19-inch front fork wheel with a disc size of 320 mm. Let's have a look at the engine. It's a 334cc single-cylinder 4-stroke engine which produces a maximum power of 29 PS and a maximum torque of 28 Nm. So let's talk more about the specs during our ride. So yes guys, continue करते हैं specs की तरफ. तो इसमें है twin exhaust system that is 1:2, और इसमें जो है रियर टायर जो है 17 इंच का है, 17 इंच विद अ डिस्क साइज ऑफ अबाउट 240 mm. और बात करें इसकी सीट हाइट जो है वो है 800 mm, और जो थोड़ी स्टिफ लगी मुझे, बट ठीक है, इट्स ओके. और इसका हॉर्न एक बार सुना देता हूँ. इसका हॉर्न जो प्रिटी डिसेंट है, पर ये जिस हिसाब से ये बाइक हैवी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसमें एक हैवी हॉर्न होता तो ज़्यादा सही रहता. इट्स माई ओपिनियन बाय द वे. और एक बार इसकी लुक देख लेते हैं. जस्ट लुक एट दिस बाइक. इसका रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत बढ़िया है गाइस. ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इससे हम मोड चेंज कर सकते हैं, और ABS ऑफ एंड ABS ऑन. एंड दिस इज द इंडिकेटर एंड हॉर्न एंड लो बीम, हाई बीम, ये सब तो आपको पता ही है. एंड द मेन फीचर इन दिस, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट. दैट्स क्वाइट गुड. और किल स्विच, यह किल स्विच और हैज़ार्ड लाइट और सेल्फ स्टार्ट. इट्स अ सेल्फ स्टार्ट ओनली. सो गाइस, राइड करके देखते हैं. और ये है इसका टैंक पैड्स, इट्स क्वाइट गुड. एंड इसका पोस्चर बहुत पसंद आया मुझे. आई थिंक नॉट सो एग्रेसिव, बट इट्स ओके, प्रीटी डिसेंट. चलो एक बार राइड करके देखते हैं. ली नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ. वीडियो ली नहीं है मैंने. 2 लाख की है. सो गाइस, आपसे मैंने बोला ही था इसका रोड प्रेजेंस देख लो आप. तो एक बार इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं.
as first gear, so let's go. Oh, that is awesome. That was awesome. That was awesome. कंफर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है और इट्स अ 6-speed ट्रांसमिशन दैट इज 1 डाउन एंड 5 अप. और एक और बार तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स अब तो इसका बहुत बढ़िया है. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस बाइक. सो लेट्स गो. When we talk about the Yezdi Scrambler, it's a mixture of 90s and modern bikes. और बात करें मेन पॉइंट्स की, दैट इज इसका सस्पेंशन एंड ऑल. तो सस्पेंशन इज़ नॉट सॉफ्ट एज कम्पेयर टू Yezdi एडवेंचर. आई फील लाइक इन एडवेंचर इट्स इवन बेटर. और वाइब्रेशंस की बात करें, मुझे इतना फील नहीं हुआ लो रेंज में तो, बट इन मिड रेंज लिटिल बेटर वाइब्रेशन इज़ देयर, बट इन माई ओपिनियन अगेन इट्स नॉट अ बिग डील. और बात करें इसकी ब्रेकिंग की, इट्स अमेजिंग, नो इश्यूज एट ऑल. एंड आफ्टर ऑल देर इज नो स्क्रैम्बलर अवेलेबल एट दिस प्राइस सेगमेंट. एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज इसका नो डाउट इंजन ट्यूनिंग इज टॉप नॉच. So guys, that's it for today. Stay tuned for more such videos and thanks for watching. Bye bye.